everyone, welcome to another episode of a podcast, The Building Blocks. I'm Aishwarya and आज हमने बाकी दो होस्ट निकाल दिए हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे और बाकी उनका जो बजट बचा है उससे we have a new venue here. So we have Parth today, who's basically leading tech teams at Tata 1mg, and he'll help us understand कि engineering mindset कितना important है when you build products. So hi Parth. Hi everyone, thanks for having me here. So Parth, quickly if you can just introduce yourself so that our audience know you better, कि what has been your journey as an engineer or journey at Tata 1mg, that will be a help. Sure. तो मेरी जर्नी यार बहुत डिफरेंट रही है. So I started working as a pre-sales guy. I started working as a technical consultant. Right from there I moved to building backend and Node.js. वहाँ पे मैं APIs वगैरह बनाता था. And then finally at 1mg I got a chance कि जहाँ पे I can work and scaling front-end technologies. Right. I joined as a software engineer. And उसके बाद I transitioned into, let's say, an engineering manager role. And the kind of experience which I had earlier from the kinds of, responsibilities and the areas which I have explored helped me a lot in, let's say, engineering manager के अंदर transition होने के. Right. Because when you are, let's say, managing stakeholders from a very initial phase of your life, then it's always easier to get into the engineering manager role. So at 1mg the best thing which I liked was the kind of autonomy which was given to me and the kind of ownership which 1mg has to offer. So I think that is something which I really loved about my role here. So this is all in all what my journey is all about. Now coming back to your question, that is engineering relevant for the product field? Now, if I were to sum up in this whole question in a single line, I would say कि यार अगर आपको आज के लिए प्रोडक्ट बनाना है तो मे बी आपको इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग माइंडसेट के साथ नहीं सोचना. बट अगर आपको कल के लिए प्रोडक्ट बनाना है देन यू डेफिनेटली नीड टू हैव दैट इंजीनियरिंग माइंडसेट. एंड व्हेन आई से कि इंजीनियरिंग माइंडसेट होना चाहिए, आई डू नॉट मीन कि यार बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इंजीनियरिंग का मतलब कि मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ. राइट. जब भी हम किसी से भी बात करते हैं तो यार ऐसा लगता है व्हेन आई स्पीक टू एनी प्रोडक्ट मैनेजर दे आर लाइक कि मुझे इंजीनियरिंग क्यों आनी चाहिए. बाय इंजीनियरिंग आई मीन कि यार आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आपको डेटाबेस नहीं आना चाहिए. राइट. बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव दैट माइंडसेट. उस माइंडसेट का मतलब क्या है कि देयर हैज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. राइट. आप लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस. एक बार हम आज का सिनेरियो लेके चलते हैं. ठीक है. आप सारे जितने भी इंडिया के अंदर बड़े स्टार्टअप्स हुए हैं उनके फाउंडर्स को उठा के देख लेते हैं. ठीक है. विजय शेखर शर्मा हो गया, आपका बिनी बंसल हो गया, आपका सचिन बंसल हो गया, पीयूष अग्रवाल हो गया. इन सारे लोगों में कॉमन चीज क्या? दे ऑल हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. और ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इज इट बाय अ चांस या इज इट बाय लक? ये ऐसा व्हाई इज दैट सो? द सोल रीजन व्हिच आई कुड आइडेंटिफाई इज दैट दे आर वेरी ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर्स. एंड अगर एज अ इंडिविजुअल आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इन द एंड फॉर द बिजनेस एज वेल यू हैव टू डू द सेम थिंग. राइट. आपको एक लार्ज स्केल के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड. इंजीनियरिंग में हमें क्या सिखाया जाता है कि आपके पास देयर इज अ सेट ऑफ लेट्स से टेक्नोलॉजी, आपके पास साइंस है, आपके पास मैथ्स है. यू गेन दैट नॉलेज, यू गैदर दैट नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. राइट. प्रोडक्ट के अंदर या बिजनेस के अंदर वो चीज कैसे डिफरेंट हो रही है कि rather than solving for or optimizing for technical matrices, you are optimizing for let's say business matrices. Correct. So I think more or less अगर आपको एक टेलीस्कोपिक व्यू से एक प्रॉब्लम को देखना है rather than viewing it from a microscopic view, then you need to have that mindset कि यार
इस चीज को हम स्केल कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1mg के अंदर भी देखें, राइट, तो 1mg के अंदर भी वी आर सॉल्विंग फॉर so many players in the healthcare field, right? The people who are, let's say, using our platform, है ना, उसको हम कहीं ना कहीं एक तरीके से मान लो कि एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें. So overall, I think this would be the answer. Understood. So you touched upon कि आज के लिए प्रोडक्ट बनाना है या कल के लिए प्रोडक्ट बनाना है. इसको थोड़ा सा डीप डाइव इफ यू कैन डू, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय आज के लिए प्रोडक्ट एंड कल के लिए प्रोडक्ट बनाना है? इज इट मोर ऑन अ स्केलेबिलिटी पर्सपेक्टिव दैट यू आर टचिंग अपॉन, और व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? राइट, तो इसके लिए भी एक बार एग्जांपल ले लेते हैं. आज से 10 साल पहले अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को देखें, तो माइक्रोसॉफ्ट इन 2013-2014 was really struggling with its products, right? Steve Ballmer करके CEO थे उस टाइम पे, who introduced the Microsoft phones, Windows phone, and उन्होंने Nokia को acquire किया था, and it failed completely, right? क्योंकि more than 90% of the market was acquired by either Apple or Google. This is when Satya Nadella came and took in, and he explored कि यार हम 2 major areas के अंदर focus करेंगे, क्योंकि everyone is moving towards mobile first technology. तो हम क्या करते हैं, हम basically Azure platform के ऊपर उसको scale करते हैं, and जितने भी हमारे Microsoft का जो core product है, for example जो हमारे Microsoft के Windows है, जो हमारा Microsoft का Office suite है, उसको हम cross platform लेके जाएंगे, right? Now he wasn't thinking about कि यार मुझे अभी के numbers solve करने. He was thinking about कि यार ये जो हमारी strength है, जो technical strength है, इसको मैं maximum लोगों तक कैसे लेके जा सकता हूँ, right? And इसको मैं किस तरीके से scale कर सकता हूँ. Similarly, जब अगर हम Myntra की बात करें, when the Flipkart and Myntra acquisition happened, then I was listening to this podcast wherein this founder of Myntra, Mukesh Bansal, he mentioned that कि यार पूरा का पूरा जो भी हमारा tech stack था, it was majorly towards the desktop web, right? And we took a hard call कि यार हम ना desktop बंद ही कर देंगे, because no one is really caring about the mobile first technology, right? तो हम mobile first की तरफ जाएं कैसे, और लोगों का वो mindset किस तरीके से बनाए. तो ना उन्होंने बोला कि यार 80 to 90% लोग मोबाइल के ऊपर ही हमारा एक्सपीरियंस यूज करेंगे. दे सॉल्व्ड इट फॉर मोबाइल बैक इन लेट्स से 2015-2016, एंड उन्होंने इतना अच्छा अपना मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाया, इतना बेटर एक्सपीरियंस दिया उस टाइम के हिसाब से, दैट दे सॉ अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन देयर मोबाइल प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, राइट? एंड उसके अंदर फिर लेटर ऑन इवेंचुअली दे टर्न्ड ऑन देयर डेस्कटॉप वेब एज वेल, कंसिडरिंग कि हर एक बंदे को केटर करना है, बट दैट कॉल हेल्प देम कि यार कहीं ना कहीं हमें स्केल करना है इस तरीके से और इस डायरेक्शन में मूव करना है. बट हाउ कुड दे टेक दैट कॉल, बिकॉज दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट कि यार हो सकता है कि आज नंबर मेरे गिर जाए, आज मैं अचानक से एक बड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे एक सडन हिट लेनी पड़े, बट मे बी 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, दिस इज द राइट थिंग टू डू. सिमिलरली अगर हम 1mg की बात करते हैं, 1mg के अंदर वी हैव डन सम रियली एक्साइटिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. फॉर एग्जांपल एक मैं डायनामिक रेंडरिंग का बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. व्हेन वी वर डूइंग डायनामिक रेंडरिंग, ये है क्या, एक सुनने में बहुत कूल सी टर्म लगता है. सो बेसिकली ये कुछ नहीं है, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपका मोबाइल वेब पेज एक गूगल बॉट को दिख रहा है, जो एक्सपीरियंस एक बॉट को मिल रहा है वर्सेस जो एक यूजर को मिल रहा है, उसके अंदर देयर इज अ डिफरेंस, राइट? एंड जो चीजें हो सकता है मेरे एक यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो एक बॉट के लिए इंपॉर्टेंट ना हो. बॉट के लिए द मेन थिंग विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज द कंटेंट, राइट? एंड एट दैट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग वाज जनरली मार्केट के अंदर लोग AMP आर्किटेक्चर यूज करते थे, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, राइट? उसको मेंटेन करने का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट था, एंड पीपल वर रियली स्केयर्ड ऑफ going away from it, because there was no clear guidelines from the Google कि यार ये आप हटा सकते हो या नहीं हटा सकते. At that time as well we took a call कि यार नहीं, this is the architecture we'll move ahead with,
एंड ये कहीं ना कहीं आगे जाके 2 साल में 3 साल में दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर अस. तो दिस इज हाउ वी रिजॉल्व दैट इशू. आज की डेट में 1mg रैंक्स ऑन द टॉप, राइट, इन द सर्च रिजल्ट्स, राइट. तो आई थिंक दिस कुड बी वन एग्जांपल. आप आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए प्रोडक्ट्स आप कैसे बना सकते हैं. मोबाइल फर्स्ट की हम बात कर रहे थे. मोबाइल फर्स्ट, me with my colleague Saurav, we were pushing from very initial start point कि यार we have to take our web platform towards the mobile first journey. बट अगर मैं इसको एक प्रोडक्ट लेंस से देखूं कि यार आपने डिफाइन बोल दिया कि अच्छा मोबाइल फर्स्ट करना है, बट करना क्या है, एक्शन आइटम्स क्या है, अगर आपको वो पता ही नहीं है, या फिर यू आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ दैट, अगर हमें मोबाइल फर्स्ट करना है, हमें एसईओ सॉल्व करना है, हमें चीजों को स्केल करना है, तो व्हाट आर द एक्शन आइटम्स और द रोड मैप फॉर डूइंग दैट. तो हाउ वुड वी डू दैट. तो दिस इज ऑल्सो इन अ सिमिलर फैशन वी ऑल्सो टुक अ कॉल कि अच्छा ठीक है यार, हमें मोबाइल फर्स्ट करना है, हमें मोबाइल के लिए सॉल्व करना है, हमें मोबाइल के लिए फास्ट बनाना है. आज की डेट के अंदर अगर हम देखें तो हम उसी प्लेटफॉर्म को लेवरेज करके वी आर इवन इंट्रोड्यूसिंग आवर ओन फ्रेमवर्क इन द सॉर्ट ऑफ वेब व्यूज, जहां पे आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कोड करके मल्टीपल जगह शिप कर सकते हैं. नाउ इमेजिन द काइंड ऑफ पावर, द काइंड ऑफ टूल इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोडक्ट मैनेजर एज वेल, कि आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग रिलीजेस. आप फटाफट अपनी एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हैं. यू डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट बैंडविड्थ ऑन टॉप ऑफ डेवलपमेंट. सो पार्थ, अभी आपने इंजीनियरिंग माइंडसेट पे टच किया. सो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, एंड ये मेरा एग्जांपल है, वेरी क्लोज टू मी. आई कम फ्रॉम अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट. मेरा कोई भी इंजीनियरिंग से एक्सपोजर नहीं है, जस्ट इन टच विद इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड डेवलपर ऑन द जॉब, बट आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर. सो हाउ डू यू recommend me, or how would you recommend me to build that engineering mindset? या जरूरी भी है engineering mindset या नहीं है when I come with you to build a product, to build a solution, right? For a non-engineer product manager, how should we tackle this? So basically मेरे हिसाब से सबसे important जो चीज़ है for a non-engineering product manager is just to understand whether this thing is feasible or not, right? अगर हम कुछ भी एक डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं विच इज आई वुड से कि टेक्निकली फीजिबल ही नहीं है, और लेट्स से कि हम बोले कि मे बी इट वुड बी फीजिबल लेट्स से फ्रॉम 5 to 10 years from now, but currently we cannot spend that much amount of time or bandwidth or costing or resources on top of it, right? So that kind of understanding we must have from the product standpoint as well when we are approaching any, let's say, technical person, be it let's say developers or engineering managers. But वो understanding कैसे आएगा, right? Because see, I am a product manager, I explore different products, and some are similar in nature. Let's say Tata 1mg है, we are selling medicines, right, on the pharmacy vertical है हमारा. Similarly, there is another e-commerce platform that I look at, and अगर उन्होंने कुछ crack कर लिया है, they have something fancy built on their platform. As a PM, I would say I'll come up to you and say यार ये हमें भी बनाना चाहिए in a similar fashion maybe, or in a different way. For our users, and then I come up with you. मैंने वहाँ पे सोचा ही नहीं कि ये feasible है या नहीं है, because let's say that e-commerce partner is already sorted, तो feasible तो है, right? Then but then I or any product manager always get a push from the engineering managers कि यार ये तो हम नहीं बना सकते, ये हम support नहीं कर सकते. So how does that kind of conversation happen? Right. यार अगर मैं बहुत simply इसका आंसर करूँ कि if technically something has been built, तो आप उसको बना तो सकते ही, ठीक है, that is one thing. But the point here is, main जो आपका सवाल आता है कि क्या हम इतने टाइम फ्रेम के अंदर उसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. For example, different companies have different agendas and different mottos, and वो specially उसी के लिए ही अपनी bandwidth and resource allocation करते हैं. For example, there are companies such as let's say Next.js, right, or Versa. तो वो बेसिकली अपना जो मेजर बैंडविड्थ है वो एक टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ही करता है, या फिर हम टेक्निकल कंपनीज पकड़ लें, राइट, हम गूगल माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, राइट. देयर वुड बी चांसेस कि उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी टेक्निकल एडवांस चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी हों,
which we would say कि यार technically implement करना तो definitely feasible है और उन्होंने किया हम भी कर सकते हैं. But the point is, do we want to spend that much amount of bandwidth and let's say resourcing on developing the same thing, right, in our platform? So that is a call which we always need to take consciously, and we have to make that comparison somewhere, that is it fruitful for us to invest so much in those solutions, or is it just okay to give one good service to the end user which would be functional and gets the work done, and also at the same time creates a good user experience. Right. So let's say एक example ले लेते हैं. We've always seen that there is some kind of a friction between an engineering manager and a product manager, right? When they come with a solution, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक बारी में अग्री कर जाते हो, right, to build a solution. I think ये general सबका observation होगा. So how does that conversation happen? So let's assume a product manager walks up to you to build something which it has not been there in your application, right? कभी नहीं था, अब कुछ नया बनाने के लिए हम आए. तो हाउ डू यू ड्राइव दैट कॉन्वर्सेशन इफ इट्स अ हार्ड वे कि यार ये तो नहीं बन सकता? So basically what happens is कि for me I would never say कि अगर कोई ना कोई चीज टेक्निकली बनी हुई है तो ये कभी नहीं बन सकता. I would simply say कि the kind of ambitious timeline you're coming up with, right, उस timeline के अंदर कहीं ना कहीं वो achieve करना is very difficult for us. If we were, let's say, just building that particular product and spending our complete focus and bandwidth on top of it, then there could be a possibility that we completely turn around the field and say here we are just gonna develop this particular thing. But otherwise I think that's not possible in most of the scenarios. So we just simply say here at this point of time इतनी जल्दी ये चीज बनाना is not technically possible. And how do we take that call is we evaluate the technical complexity of it, right? We look at the technical set. बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीजें जिस टेक्निकल सेट के ऊपर हमारे रिसोर्सेज काम कर रहे हैं वो टेक्निकल सेट ही डिफरेंट है, एंड यू माइट हैव टू ग्रूम योर रिसोर्सेज और मे बी हायर न्यू रिसोर्सेज फ्रॉम द सेम टेक स्टैक, which is not always feasible to do. Right, so that is when we have to evaluate all the trade-offs versus, let's say, what kind of business benefit we will get out of it, and then we make that call mutually, that whether we should be going ahead with this product, ambitious product that you have come up with, right, or not. Understood. So sometimes it also happens कि timeline एक constraint नहीं होता है. We come with an open timelines कि ये build करना है and we can see कि जितना भी time लगेगा we can do it. But we always come across a question कि यार ये आपका use case है, but does it apply to all other use cases? ये future में use होगा या नहीं होगा, reusable होगा या नहीं होगा? And that is also when engineering managers take a call कि ये हमें build करना है नहीं करना है. How does it how does that function? Because as a product manager I'm just coming from the perspective of one product. एंड मेरे प्रोडक्ट के लिए वो यूजफुल है, बट कंपनी में लेट्स से 5 अनदर प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए वो यूजफुल नहीं है. सो व्हाई शुड आई वरी अबाउट दैट, राइट? मेरे प्रोडक्ट के लिए यूज केस है, आई वांट टू बिल्ड इट फॉर इट. राइट. सो सिमिलरली जहां से हमने स्टार्ट किया था कि हम कितना बड़ा एक विजन लेके चल रहे हैं, जनरली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग हम कभी भी ना एक छोटी गेम की बात नहीं कर रहे होते. वी ऑलवेज से कि यार हमने आज ये चीज बनाई है, आई डू नॉट वांट टू रीबिल्ड इट. एंड अगर मैं एक कोई भी फीचर या प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आई वुड आइडियली वांट नॉट जस्ट मी, माय टीम, लेट्स से क्रॉस टीम्स, एंड इवन द पीपल आउटसाइड दिस कंपनी शुड बी एबल टू यूज इट, राइट? तो वी डेवलप सॉल्यूशंस विद दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, राइट? अगर हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो आई वुड ऑलवेज वांट कि हम quickest solution नहीं best solution deliver करें. We deliver value in the end, right? But at the same time, as you said, we always have to evaluate कि यार currently may be हो सकता है कि अभी business scenario इतना ही है, use case इतना ही है. Maybe we are in the MVP mode, maybe we are in the experimentation. So always we cannot say that I'll take let's say 6 months to develop a small feature, right, or I want to always solve for all the people. Correct. That is not always possible. But yeah, if you talk about
again, engineering mindset or solving it from, for a larger audience, then definitely we would love to take that time and love to take that bandwidth to develop a solution. So this all sounds interesting, Parth. So one question which is very very personal to me, and I think ये सारे product managers को होता है. Just on a lighter note, आप जो ये timelines बताते हो of the feature that you want to build, ये सच्ची होती है या झूठी या कितनी buffed up होती है ये? Mostly झूठी. Just kidding. But we take care of the buffer in general. So कितना buffer होता है, like just for understanding for product managers? मतलब we take, let's say, roughly around 15-20%, which is a rule which I follow personally, because we take it for, let's say, कि अगर कोई ना कोई अवेलेबल नहीं है, कोई bugs आ गए हैं, any unforeseen issues which we see, तो हम कहीं ना कहीं वो 15-20% buffer लेके चलते हैं. So all my product manager friends, now you know how to negotiate with the engineering managers on the timelines. Yeah, right. Okay, 15-20% का buffer is always there. But we are also very upfront about it कि इतना buffer हम लेके चल रहे हैं. Got it. So, Parth, let's quickly, have a very interesting segment of our podcast, that is the rapid fire round. So, आपने हमें बहुत सारा engineering mindset and why engineering mindset is important for product managers पे, बताया. I'll come from the product manager lens now. Even the engineering manager should understand the product, right? Sure. Let's see कि where you stand at that point in time. आपको कितना product समझ में आता है? For a product manager perspective. ठीक है? Right. Ready? Let's start? Sure. Let's keep it very quick and actual rapid. I'll try my best. Yeah. We'll start with the basic easy question. What is your favorite product? And not from a technical perspective, but from a product perspective. In healthcare, Tata 1mg, generally Apple, iPhone basically. Got it. So, what do you prefer? A user experience feature by a user experience or by a technical complexity? User experience. Got it. Kanban or sprint model? Kanban. What size of team would you prefer? 2 product managers in a team or a 1 product manager? As many as I can have. So, one last question. Right. What is your preferred tech stack, backend or frontend? Overall tech stack which can scale. Good one. So I think, guys, that was the end of a rapid fire. So Parth, I'll just request one parting advice for our aspiring product managers or seasoned product managers, how they can scale their engineering mindset along with product mindset. I think only one thing which I can say in the last is that I think हमें कहीं ना एक बाउंड्रीज अपने लिए बना लेनी चाहिए, राइट? कि हम तो सिर्फ प्रोडक्ट करेंगे, हम सिर्फ टेक करेंगे, हम सिर्फ मार्केटिंग करेंगे. फॉर us it should be that we are solving problems, and whatever is required to solve those problems, we'll explore all those things. At least I approach the problems with that mindset. Right. So I think that can be helpful. Got it. So just one question that clicked my mind when you were talking about these boundaries, and everyone should work from the problem solving mindset. Okay. So what would you prefer? When would you want to enter the cycle of a product strategy or product development, right? जब product सोच कर एक product manager आपके पास आ गया कि ये बनाना है, or rather when he is actually strategizing that product, would you want to be a part of the cycle at that point in time? From the very initial phase, in fact, I would love to even speak to the end customers and see how can I create that product from the scratch, from the strategizing point of the time. Got it. So I think this is a very good point that Parth has already mentioned. Everyone should collaborate at the point 1 and then move forward rather than thinking a product and then trying to sink in everyone. Thank you, Parth. It was great having you here. I think this episode will help all our viewers from an engineering perspective as well. And even the engineers can, I think, look at this particular episode of our podcast to understand about how engineering and product are correlated. Right. So thank you so much. Thank you.